हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन द केस ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस पेड टू द आरडब्ल्यूए यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन formed by the owners of the apartment। आइए कुछ FAQ के द्वारा समझते हैं applicability of GST on flat maintenance charges। Question number 1. Are residents who pay maintenance charges to RWA in a housing society exempt from paying GST? Yes, अगर आपका मंथली मेंटेनेंस 7,500 रुपए से कम है देन इट इज एग्जेम्प्ट। अगर मंथली मेंटेनेंस 7,500 रुपए से ज्यादा है देन पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। Question number 2. Can housing societies qualify for GST exemptions? अगर RWA यानी रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का ईयरली कलेक्शन 20 लाख रुपए से नीचे है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। Question number 3. If a member pays more than 7,500 per month maintenance, then is it required for the RWA to take GST registration? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड। नंबर ए, मंथली मेंटेनेंस पर मेंबर शुड बी मोर देन ₹7,500 एंड नंबर बी, ईयरली मेंटेनेंस कलेक्शन बाय RWA इज मोर देन ₹20 लाख। यानी दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होता है देन जीएसटी इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड। आइए एक टेबल के द्वारा और डिटेल्स में समझते हैं। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। Serial number 1 is the aggregate turnover of ₹20 lakh or more in the financial year? No. Are the maintenance charges per month per member more than ₹7,500? No. Is GST registration required? Then इसमें applicable नहीं है, not required. Is GST chargeable for the goods or services supplied by RWA? No. Serial number 2 is the aggregate turnover of ₹20 lakh or more in the financial year? Yes. Are the maintenance charges per month per member more than ₹7,500? No. Is GST registration required? No. Is GST chargeable for any goods or services supplied by the RWA? No. Serial number 3. Is the aggregate turnover ₹20 lakh or more in the financial year? No. Are the maintenance charges per month per member more than 7,500? Yes. Is GST registration required? No. Is GST chargeable for any goods or services supplied by RWA? No. Serial number 4. Is the aggregate turnover ₹20 lakh or more in the financial year? Yes. Are the maintenance charges per month per member more than ₹7,500? Yes. Is GST registration required? Definitely yes. Is GST chargeable for any goods or services supplied by RWA? Yes. Question number 4. Can RWA claim an input tax credit on GST paid for services or goods purchased for the society? Yes, GST input can be claimed by RWA for the following. Number 1, capital goods such as generators, water pumps, lawn furniture, etc. Number 2, goods such as taps, pipes, other sanitary or hardware fittings. Number 3, input services such as repair and maintenance services, etc. Question number 5. Where a person owns more than one flat in a housing society or a residential complex, thus the ceiling of ₹7,500 per month per person applies to per flat or per person. The limit of 7,500 per member per flat shall apply separately for each apartment or flat। यानी हर फ्लैट को सेपरेट माना जाएगा अंडर RWA। होप ये छोटा सा वीडियो इन रिगार्ड टू जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन मेंटेनेंस चार्जेस पेड टू RWA आपको समझ में आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।